Yeah, very important and I think a very pertinent question, journey of architecture. I think journey of architecture for me, I think my quest still continues. Or I think as a student of architecture, जो हम सब हैं, even after 20 plus years of practice, मुझे लगता है कि there's so much to learn, there's so much to learn. But I've been very lucky growing up in a city like Islamabad, Rawalpindi, where I was born and raised. My father started his practice in 69-70 from this particular area. Of course हर जगह उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर थे और यहीं पे रहते थे, तो मुझे मौका मिला इस शहर को रियली एक्सप्लोर करने का. इससे बेहतर और वेल डिज़ाइन सिटी हो नहीं सकती थी, विद द ब्यूटीफुल नेचर अराउंड इट, द ग्रीनरी अराउंड इट. सो आई थिंक मुझे ये जो एक्सपोजर मिला वो बहुत ही ज़बरदस्त था, बिकॉज इट वॉज अ फेयरली न्यू सिटी. आई सॉ द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी हैपनिंग फ्रॉम वेयर इट इज़ नाउ टू वॉट इट वॉज अर्लियर. और इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन उन बहुत सारे आर्किटेक्ट्स की है जो सर फहरिस्त हैं इस शहर को बड़ा करने में. तो आई थिंक हमें मौका मिला, और मुझे पर्सनली मौका मिला बिकॉज आई वाज द सन ऑफ अ फेयरली रिनाउंड आर्किटेक्ट जिन्होंने बहुत काम किया शहर में. बट आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली जो बड़े होते हुए मुझे दोस्त मिले और उसके अलावा फैमिली और क्लाइंट्स बाद में मिले, वो उनने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया. क्योंकि मेरे घर में मेरे वालिदैन के दोस्त ज़्यादातर वो लोग थे जिनमें पोइट्स थे, राइटर्स थे, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स थे. उनका आना जाना था, तो उनके साथ बात करके, उनकी बात सुन के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. और इवन नाउ I feel so privileged that I was able to sit with people of that intellect जिन्होंने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के नाम को इतना रोशन किया. They were iconic figures of our society, of our community, and I think this journey still continues. And what better when you have a father like Suhail Saab to teach you every step of the way. Even now with his 54 plus years of practice that we celebrate every day, वो उतनी involved हैं ऑफिस में, बल्कि बहुत दफ़ा तो वो हमसे ज़्यादा involved हो जाते हैं, और टीम को सिखाने में उनका इतना ज़्यादा, वो expectations बहुत ज़्यादा हैं. So I think ये journey will never be less, it will always grow. And अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि जी हम तो बिग शॉट आर्किटेक्ट्स बन गए 5 साल के बाद और हमें डिज़ाइन को एक्सप्लोर नहीं करना, उसको समझना नहीं है, so I think there is absolutely no end to learning. So I think the journey has been beautiful, and I think everybody needs to understand that architecture is not a 9 to 5 profession. It is a profession जिसमें आप रात को सोने से उठने तक आपको डिज़ाइन आपके दिमाग में चल रहा होता है. अगर वो नहीं हो रहा तो then there are serious concerns. So I think my journey has been amazing that way. Suhail Fawad Architects is primarily a medium-sized firm, and this is how much we want to be. We have no idea and no intention of growing bigger. We feel that 15-16 की team is good enough, maybe even less, because I feel कि काम उतना किया जाए जो आपको उसके जो basic necessities हैं client की, उससे आपको दूर ना करे. So this particular firm was formed in 2000. And after 23 years, we've been able to deliver some interesting and learning for others to see. We're from diverse low mid-rise buildings to lots of sports buildings and lots of mid-size large houses to a lot of interiors retail में हम गए. बट आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे काम में, और जिसको आई थिंक मैं बहुत चेरिश करता हूँ, वो लव फॉर मटेरियल्स है. आई थिंक देयर इज़ नॉट बीन अ सिंगल प्रोजेक्ट इन द ऑफिस सिंस आई जॉइंड जहाँ पर मटेरियल्स और उसकी स्पेसिफिकेशन से पहले काम ना किया गया हो. सोहेल साहब बिलीव्स, एंड आई फील दैट ही इज़ पर्टिकुलरली राइट अबाउट दिस फैक्ट, कि आपके काम की जब तक आप डिज़ाइन से पहले स्पेसिफिकेशन उसकी वर्कआउट ना करें और आप फिर एकदम रैंडम उसमें लग जाएंगे, यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये मटेरियल भी है, वो भी है, तो फिर देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स. So I think from our office, we continue to learn from the various aspects of design, but we're really focused on choosing the materials. We're all, particularly me and Suhail Saab, are regionalists by heart. We really pick on local materials. We've really pushed the local industry forward by maximizing on the materials in our projects जो local हैं, जो indigenous हैं. And I think we really look forward to projects जहाँ पे हमें client ये पूरा freedom देता है कि हम मिल के और उनको उसको बेहतर से बेहतर बनाते हैं through our local industry. And we've been able to market the different materials in a big way. उनको बड़ा हमने showcase किया है international talks में भी अपनी, और
आई थिंक बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, एंड सोहेल साहब भी इस पर बहुत फोकस्ड हैं, कि इट्स द टीम दैट ब्रिंग्स टुगेदर दिस गुड प्रोजेक्ट. अगर हम ये कह के बैठेंगे जी मेरा काम है या तुम्हारा काम है, ये नहीं है. आई थिंक द एंटायर प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल व्हेन द टीम कम्स टुगेदर. And we've had some amazing architects and engineers and draftsmen and other people within the office इन्होंने मिलके उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया है. सो आई थिंक इट्स द एंटायर टीम दैट कम्स टुगेदर टू डिलीवर अ प्रॉपर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन द ऑफिस. आई थिंक हम इंडस्ट्रियल एरा को या इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक तरफ नहीं रखा जा सकता, बिकॉज आई थिंक हम ये सोचना कि हम 1900s की अर्ली 1900s की बिल्डिंग को लोकलाइज कर लेंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. हाँ, हिस्टोरिकली हमें ये देखना पड़ता है कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, बट हाउ डज इट अडॉप्ट और अडेप्ट टू अ पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ डिज़ाइन. सो आई थिंक हम ये कहें कि जी हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल लर्निंग को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं लाएंगे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है. आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ये इसको हम टेक्नोलॉजी की तरह से हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं. पाकिस्तान में अगर एक चीज़ है तो उसको हम फ्रॉम दिस इंटरनेशनल लर्निंग और फ्रॉम व्हाट इज बीइंग टॉट अराउंड द वर्ल्ड, उसको हम कैसे इस करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे इन द राइट मैनर, वेयर वी से अच्छा हाँ हम हमारा ब्रिक जो है हमारी जो लोकल मटेरियल्स हैं या जो भी हम लोकली बनाते रहे सालों से, उसको हम थ्रू दिस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स बीन टॉट एंड हाउ इट्स बीन इम्प्रूव्ड, हम कैसे अपने तरीके से उसको लोकलाइज कर सकते हैं. अगर हम ये समझ जाएंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी ये समझ जाएंगे कि हाँ हमें बिल्डेबिलिटी को देखना है, कैसे ये बिल्डिंग बनेगी, और इसको बेहतर समझने की कोशिश करेंगे. वेयर आई थिंक देयर कोर्स नीड्स टू बी इन प्लेस फॉर एटलीस्ट 2 semesters where we can really plug into what is being taught around the world and then kind of bring it together, fuse it together to Pakistani learning. And I think you will see some fantastic projects in the coming years if we don't neglect what's happening and then adapt it to a way that it comes out the best for a Pakistani market. आई थिंक बहुत दफ़ा मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ और आजकल ज़्यादा एकदम सडनली सोशल मीडिया में नज़र भी आता है कि आजकल के यंगस्टर्स जो है ना, इनके काम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, एक जैसे लगते हैं. सो आई थिंक सोशल मीडिया ने या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम या इवन पिंटरेस्ट को देखें, और कुछ और पोर्टल्स भी हैं, आपको आप एक चीज़ टाइप करते हैं वो आपको 50 किस्म की ऑप्शन दे देता है. आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स हु आर एंड देयर मेनी. पाकिस्तान में इस वक्त 30+ स्कूल्स हैं, ऑलमोस्ट 40 पार्ट द एक्रेडिटेशन प्रोसेस. सो आई थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एक्चुअली नो शॉर्टकट टू सक्सेस. अगर हम ये ख्याल करते हैं, हम सोचते हैं कि जी हम सडनली बिग शॉट आर्किटेक्ट्स बन जाएं और ये देखें, एवरीथिंग एज अ प्रोसेस, देयर इज अ टाइम टू योर सक्सेस. यू कैन इजीली राइट ऑन योर कार्ड कि मैं CEO हूँ राइट आफ्टर स्कूल और मैं MD हूँ. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू लुक फॉर समथिंग व्हिच इज कॉल्ड योर्स. There is, and we're very lucky to say that Pakistani architecture is a brand. There are many iconic names in the country who've given Pakistani architecture a name. And I think हम पाकिस्तान भर से बाहर निकलते हैं, नेशनल एक्सपोजर मिलता है हमें, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि यार हमारा नाम है, हमारी आर्किटेक्चर को लोग जानते हैं, उनको एक स्टाइल का आइडिया है कि पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है. सो वाई पिक अप व्हाट द डेवलपर टेल्स यू टू डू, और वाई वुड यू लुक एट एलियन आर्किटेक्चर व्हिच इज सो वेस्टर्नाइज्ड, व्हिच डज नॉट फिट इनटू पाकिस्तानी community or Pakistani design. So look for something which is more your architecture, which you will be known for. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक मटेरियल चूज करने का जी मैं इसमें काम करूंगा और मैं एक्सपेरिमेंट जरूर करें, लेकिन देखें कि किस तरह एक छोटा सा छोटा प्रोजेक्ट भी क्लाइमेटिकली वेल डिजाइंड है, एनर्जी एफिशिएंट है, और सिर्फ उसके फसाड पे काम ना करो, उसकी इंटरनल प्लानिंग पे काम करो. बिकॉज मैंने ये रियलाइज किया है और मैंने सोहेल साहब से खुद सीखा है, उन्होंने कहा जब तक आपका प्लान बेहतर रिजॉल्व नहीं होगा ना, फसाड नहीं निकल पाता, और अगर आपको फसाड पहले आ गया तो फिर देयर सम सीरियस प्रॉब्लम्स. सो आई थिंक यू शुड लुक एट एंड एज अ mid-level architect at this point in my life, I feel that design is never complete unless you go back to it. So look for opportunities, look for things that you want to do, but come up with your own style of design. दो बहुत important elements, identity और versatility. I think for me identity is important. Important ये इसलिए है
कि I want people to recognize our work, the work of Suhail Fawad Architects, and say अच्छा यार ये इनका काम है. And I've built through that. When I joined Suhail Saab, it was a very important moment for me in my life, but I also felt कि यार एक आदमी जो मेरे वालिद भी हैं और उनका काम है, उनको लोग जानते हैं, where do I come in? How will I have my own identity as an architect? So I started to work, I really worked around that and started to understand materials. And there were times in my first 5 years of practice where I sat with all kinds of labor and all kinds of mistri और हर तरह के लोगों के साथ, carpenters के साथ, जिनसे मैंने काम समझा और उसको अपने तरह से उसको ट्रांसफ़र करने का तरीका ढूंढा. उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने सोहेल साहब के डिज़ाइन फ़िलासफ़ी को अपने आप अपने स्टाइल में उसको, because I loved what he did. I was in love with brick, but I tried to really complement brick as a contemporary material, which is being done around the world, and I've seen it across in my travels to US or Europe or even London or even other South Asian or Asian countries where I've traveled, कि वो अगर brick use कर रहे हैं तो उसके 10,000 तरीके हैं इस्तेमाल करने के. वो एक contemporary स्टाइल से भी यूज़ हो सकती है, वो एक बेसिक लेवल से भी उठाई जा सकती है, where the facade becomes the way it's been kept. फसाड के जो ब्रिक है वही आपकी मेन ब्रिक बन जाती है, वही आपका फसाड बन जाता है. सो आई थिंक वो लोगों को अंदाजा नहीं होता कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ coming up with an identity of your own, where people say अच्छा यार ये इसका प्रोजेक्ट होगा या ये इसका डिज़ाइन होगा. तो आई थिंक फॉर मी इट वाज इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि वर्सेटिलिटी में कोई गलती है या वर्सेटिलिटी नहीं होनी चाहिए. आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन and exposure to all kinds of materials is extremely important for every architect, and I think we all need to sit around in Islamabad, Pindi के around बहुत सारे बड़ी बेहतरीन चीज़ें अब आपको मिलनी शुरू होगी. इसमें natural stones हैं, इसमें natural materials हैं like brick and others, where you can really experiment with local concrete tiles, local terrazzos, एक तो बेशुमार materials हैं. सिर्फ you need to go around and find them for yourself. अगर आप एक चीज़ पे stick हो गए तो I think there's absolute disaster for architecture in Pakistan. So for me, identity is extremely important. I think boost बहुत important है किसी भी आर्किटेक्ट के लिए to really pick up कि यार मैं क्या किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ. So 2002 onwards जब से मैं प्रैक्टिस करनी सोहेल साहब से शुरू की, तो we were going through small things, large things, and Suhail Saab made sure that I was kind of open to understanding how a large project is to be handled. Because a large project में सिर्फ architecture नहीं होता, then you need to really hold on to structure, design, MEP and all other HVAC के साथ साथ हमें हर चीज़ लेकर चलनी होती है. So how do you coordinate? Because you are the lead consultant. So घर और कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स करने के बाद मौका मिला एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट करने का, जो आई थिंक हमारी एंट्री थी इनटू इस्लामाबाद क्लब. तो 2009 में वी वन द फर्स्ट डिज़ाइन एक्सेलेंस अवार्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान फॉर द स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स इन इस्लामाबाद. अब 2002 से 2009 का जो 7 साल का सफ़र था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हर स्केल, हर किस्म के डाइवर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला. तो सडनली जब आप एक अवार्ड जीतते हैं, so it becomes it gives you that push, and I think that one thing led to many others in the future, with many recognitions and international talks and international exposure. So I think there was then no looking back, and I think वो एक recognition realizes कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं. So I think that was my start to exploring more and learning more. So Archistan has a very interesting thing about it, and I think मैं जब से पिछले साल एक से डिफरेंट लोगों की बातें सुनता हूँ और मैं उनको देखता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ. I think Archistan has been one of the greatest platforms for all architects. मैं ये नहीं कह रहा कि younger architects, but I think for contemporaries also. The reason is that it's opened a dialogue, it's opened a discourse for the upcoming architects and contemporaries alike, for the simple reason that हम लोग बड़े insecure हैं अपने बारे में. हम एक दूसरे से बात करते हुए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए बहुत दफ़ा परेशान होते हैं. So I think Archistan has been that portal, that particular moment for anyone to come and really open up about how he feels about his work, about what he's been learning as an architect,
and then of course being able to see what young architects are doing, and they're fantastic young architects who have come up in the last few years, who are really experimenting, they're really documenting their projects, जो बहुत ज़्यादा लैक करता था सीनियर आर्किटेक्ट्स में. बहुत अच्छा काम पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स ने किया, बहुत सारा काम डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है. सो आई थिंक वो पहली बात तो है कि अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो हमें मिला, जैसे आर्चिस्तान है, where I was able to, a person in a icon like Ijaz Qadri Saab coming up with a young architect like Shahriyar, and then others जिन्होंने इसको form किया और एक effort की. I mean, ये effort करना किसी के लिए आसान नहीं, within their practice, within their time, कि आप document कर रहे हैं. So I think ये चीज़ें जो हैं ये बहुत important है. And I'm so grateful to Archistan for giving me the opportunity to come and say a few words about what I've learned through the process. And I assure you that we need to come together, and this is the best way to do it, to come and talk about your work, to come and learn from what you don't. Because हमारे दफ्तरों में बहुत दफ़ा होता है कि आपकी बहुत सारी जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आप सीखना नहीं चाहते, आप कहते शर्मिंदा हो रहे होते कि यार. तो इससे आपको मौका मिलता है कि आप जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं कि यार जिनको जो चीज़ करनी आती है आप उनसे कुछ सीखें, और कुछ जो आपको आता है वो आप उनको सिखाएं. आई थिंक दैट्स बीन एन अमेजिंग थिंग, एंड आई कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ आर्चिस्तान फॉर ब्रिंगिंग दिस टुगेदर एंड मेकिंग इट हैपन. थैंक यू वंस अगेन.